Before I get to replying on the specific issues, I think what I want to highlight is, as I said at the beginning, stimulus plus reforms. An opportunity has been taken out of the pandemic situation. A challenging situation of the pandemic did not deter the government, did not deter us from taking up reforms which are going to be necessary for sustaining a long-term growth for this country. And as a result, very many steps were taken out and announced even during the Atmanirbhar package announcements, and in this budget we have kept the pace up and announced measures which are for the reforms. And reforms, not just one-off, reforms not just every now and then, but reforms riveted in a policy. Riveted in a policy which is therefore going to give a neat background, a layout spread before the Parliament for people to know that this is not a subjective, knee-jerk reform because you're every now and then questioned on it, but a reform which is going to lay a path for India to be one of the top economies of the world in the coming decade and further. So that kind of an approach, which is a courageous approach of a government which believes that the people of India have mandated it to do such an exercise. Respecting wealth creators, respecting taxpayers, and respecting honest citizens is something which we consistently follow, and that is why in responding to the President's address, Prime Minister, when he spoke about small farmers, he spoke about respecting wealth creators, and unless wealth creators create wealth, there's nothing which is going to be with the government to distribute. Distribute to the poor, distribute to the migrant laborers. Unless wealth creators give the taxes and generate that kind of a lubrication in the economy, you're not going to have any money to distribute, sir. And therefore, let's understand, consistently talking and also facilitating economy is a primary responsibility of any responsible government. जब ये कानून लागू होंगे, तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी, और सिर्फ दो लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। क्योंकि छोटा किसान से हम दो, हमारे दो के लिए किसान से जमीन हड़पती गए, मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना दो से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया, मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हाथ करके बोल सकते थे, हम दो हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया। पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है, इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। I will constantly say things which will demean India, which will show India in a poor light, and constantly that will be my rebel-like look to insult India, build fake narratives. Nothing will go well for India, यही कहते रहे,
भयंकर abuse, total unacceptable terminology for constitutionally elected heads उपयोग करते रहना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कटाक्ष होने के बाद अपोलोजाइज करना, मगर दोबारा वही साइकिल में अब्यूज करो, अपोलोजाइज करो, अब्यूज करो, अपोलोजाइज करो, यही रास्ते पे चलना, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज करना. I'm very scared to think probably he's becoming the doomsday man for India.